बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोफिजियोलॉजी BSN थर्ड सेमेस्टर पढ़ते हैं अबाउट इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। सो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म pathogens that invade it is called immunity. Immune system produce antibodies or cells that can deactivate the pathogen. पैथोजन बॉडी में गया, पैथोजन का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या एनी एंटीजन जो बॉडी का एंटीजन ना हो, तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इम्यून सिस्टम फ़ौरन एंटीजन को किल करके आउटसाइड द बॉडी वेस्ट करता है। तो फंगाई, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया और वायरसेस आर ऑल पोटेंशियल पैथोजेंस हैं। What is an infectious disease? Infectious disease is one in which the minute organism invisible to the naked eye invade and multiply within the body, जो आपको आंखों से नज़र ना आए और बॉडी में वो मल्टीप्लाई करे। Many of these organisms are contagious, that is they spread between people in close contact. जो कुछ इस तरह के माइक्रोब्स हैं जो वन ह्यूमन टू अनदर ट्रांसफ़र होते हैं, उसको कॉल कॉन्टीजियस। द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई माइक्रोब्स इज़ तो सबसे पहले किसने माइक्रोब्स को फाइंड किया? रॉबर्ट कोच ने फाइंड किया था। वी स्टिल यूज़ कोच पोस्टुलेट्स इन डिजीज आइडेंटिफिकेशन। द इम्यून सिस्टम इंक्लूड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन द रिकॉग्निशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स। वाइट ब्लड सेल्स, फेगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, बोन मेरो एंड लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड योर स्प्लीन आर ऑल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये वो लिम्फेटिक सिस्टम है जो माइक्रोब्स को स्टोर करके तो इसके अंदर इम्यून सेल्स होते हैं। यहाँ पे लिम्फ में इम्यून सेल्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करता है। डिफेंस लेवल ऑफ द इम्यून सिस्टम, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक में मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, बायोलॉजिकल बैरियर। तो इनिएट इम्यून सिस्टम है फेगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। फिर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है उसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी आते हैं। दिस इज़ द स्पेसिफिसिटी। ओके, first line defense या innate immune system. The body first line of defense against pathogens uses mostly physical and chemical barriers such as skin act as a barrier to invasion. Sweat has a chemical which can kill different pathogens. Sebaceous gland, tear, muscle, saliva, skin, low pH, wax and mucus. This first line defense, tears have the lysosomes which a powerful digestive ability to render antigen harmless. Saliva also has a lysosome. Mucus can trap pathogens which are then sneezed, coughed, या washed away, destroyed by chemical. Stomach acid destroy pathogens. Cilia of the respiratory tract expel out the pathogen. A second line defense, if the pathogen is able to get past the body, first line of defense, and an infection start, the body can reply. Second line of defense, this will result क्या होता है इसमें? इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होता है। तो रेडनेस ड्यू टू द कैपिलरी डायलेशन रिजल्टिंग एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से होता है रेडनेस। हीट होता है ड्यू टू द कैपिलरी डायलेशन रिजल्टिंग इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से। स्वेलिंग होता है ड्यू टू द पैसेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द डैमेज टिश्यू की तरफ, तो स्वेलिंग होता है। पेन ड्यू टू द मेनली टू द टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड टू द लेज़र एक्सटेंट या स्वेलिंग की वजह से पेन भी होता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्किन में सुई लगी है, स्टेप ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेजन और बाय पैथोजेंस। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट द क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द सर्कुलेटिंग सिस्टम एक्सेस टू इंजर्ड एरिया। तो वाउंड बन गया, तो वाउंड में क्या बनेगा? हिस्टामीन और फेगोसाइटिक सेल्स आ गए। तो सबसे पहले तो डैमेज टिश्यू रिलीज हिस्टामीन, इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द एरिया। तो ये एमसीक्यूज़ में आता है कि हिस्टामीन का फंक्शन क्या है, तो वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। सेकंड में हिस्टामीन काज करेगा, कैपिलरी लीक करेगा, जो फेगोसाइट्स और क्लॉटिंग फैक्टर वाउंड तक आएंगे। थर्ड में फेगोसाइट इनगल्फ बैक्टीरिया एंड डेड या सेलुलर डेब्रिस। और फोर्थ में प्लेटलेट मूव आउट ऑफ कैपिलरी टू सील द वाउंड। तो ब्लड के प्लेटलेट क्या करेगा? ब्लड फ्लो को रोकने के लिए प्लेटलेट यहाँ पे जमा हो जाएंगे। थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड बी सेल्स आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी एट प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी विच बाइंड्स टू एंटीजन एंड टेक इट टू इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय इट।
These antibodies are mainly protein immunoglobulin IgA present in the saliva, clostridium, respiratory and GI secretions and tear defend external body surface. IgD it control the lymphocyte activation. IgE responsible for hypersensitivity reaction. IgG is the main antibacterial and antiviral antibody. IgM is the larger antibody. तो बी सेल्स जो होता है जो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है और बॉडी की ये वाले ऑर्गन जहाँ पे ये प्रेजेंट है इसको प्रोटेक्ट करता है. टी सेल्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी it directly attack antigen like virus and bacteria. It have the ability to identify an antigen and produce lymphokinase that kill the target cells. Hyper T cells CD4 recognize the antigen and also activate B cells. B cells maturations. Killer T cells CD8 kill the antigen. This is the classification of immunity. एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनिएट इम्यूनिटी. फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. नेचुरल में पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी है. आर्टिफिशियल में पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफ़र और या एक्टिव इम्यूनाइजेशन. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी. ऑब्टेनिंग immune protections. Natural immunity. Innate immunity is the natural and non-specific immunity that can protect the body from the foreign agent. Natural immunity. It is natural and non-specific immunity that can protect the body from the foreign agents such as phagocytosis and macrophages, cough reflex enzymes in tears and skin oils, mucus which traps bacteria and small particles. सबसे पहले टारगेट सेल की लाइसिस. फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस ने इन्फेक्शन कर लिया तो वो नेचुरल किलर सेल आएगा, फिर उसको टारगेट सेल तक उसकी लाइसिस करेगा. अगर बैक्टीरिया है तो मैक्रोफेज आएगा, फिर वो फेगोसाइटोसिस करेगा. Natural acquired active immunity. When the natural body come in contact with a pathogen, the body produce antibodies against these pathogens. It is for long time. An example of natural acquired active immunity would be resistance cold due to the previous exposure some antibodies against the cold virus. Due to the presence antibodies, the person is able cooled or faster and more efficient. They had no prior exposure. Natural acquired passive immunity. It includes antibody transfer from mother to fetus and also through the breast milk to the baby. IgG across the placenta. It is for short time. Artificial acquired active immunity. It is achieved after administration of the vaccine या toxoid. Antibody are formed by the body against that specific organism. Artificial acquired passive immunity introduced into the individual body, e.g. gamma globulin. Artificial acquired passive immunity result when the antibodies या lymphocytes produced outside the host are introduced into the host. A bone marrow transplant given to a patient with the genetic immunodeficiency is an example of artificial acquired passive immunity. Descriptions of third line of defense mechanism. Sometimes the second line of defense is still not enough and the pathogen is then heading for the body's last line of defense, the immune system. The immune system recognizes, attacks, destroys, and remembers each pathogen that enters the body. It does this by making specialized cells and antibodies that render the pathogens harmless. Unlike the first line and second line defense, the immune system differentiates among pathogens. For each type of pathogens, the immune system produces cells that are specific for that particular pathogen. An antibody is a protein produced in the response to an antigen. Antigens are the macromolecules that elicit an immune response in the body. The most common antigens are protein and polysaccharide. Immunization. What is immunization? Is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by administrations of a vaccine. Vaccines stimulate the body own immune system to protect the person against subsequent infections or disease.
What is vaccine? A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. It typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbes. The agent stimulates the body immune system to recognize that agent as foreign, destroy it, and remember it so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms that it later encounters. Types of vaccine. Killed vaccine. These are preparations of killed pathogenic agents. For example, flu vaccine. Attenuated vaccine. These are live virus particles that are made weakened to so cannot cause disease. Vaccine against measles, mumps, subunit vaccine. These are purified component of the virus such as surface antigen, hepatitis या B virus. Toxoid vaccine for toxin producing bacteria such as diphtheria. What is hypersensitivity and autoimmunity disorder? Hypersensitivity immunological reaction refer to undesirable immune reaction produced by the normal immune system. Hypersensitivity reaction, four types based on the mechanism involved and time taken for the reaction. A particular clinical condition disease may involve more than one type of reaction. Is called hypersensitivity reaction. This is so easy. इसकी क्लासिफिकेशन है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. टाइप 1 और टाइप 2 एंड टाइप 3 ये एंटीबॉडी मीडिएटेड हैं, जबकि टाइप 4 सेल मीडिएटेड है. तो व्हाट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? इसको इमीडिएट भी कहते हैं. इट इज़ रेपिडली अकरिंग रिएक्शन दैट फॉलो द कम्बिनेशन ऑफ एन एंटीजन with antibody previously bound to the surface of mast cells and basophil. It is mediated by IgE antibody. Antigen plus antibody bound to mast cells and basophil and cause hypersensitivity reaction. Mechanism: the first exposure to antigen allergen activates the immune system and causes production of IgE antibodies specifically reactive against the antigen. These antibodies become attached to the surface membrane of the mast cells and basophil. When subsequent exposure to the same antigen occur, an antigen-antibody interaction take place on the surface of mast cells base and or basophil or cause degranulations of these cells. The cytoplasmic granules of mast cells release mediators that are responsible for the tissue changes and clinical features of type 1 hypersensitivity reaction. सबसे पहले एंटीजन आया, एंटीजन की वजह से आईजीजी एंटीबॉडी बना, वो एंटीबॉडी बेसोफिल पर अटैच हुआ, उसके बाद उसने मीडिएटर रिलीज़ किए. मीडिएटर के रिलीज़ होने से हाइपर सेंसिटिविटी के साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में अपीयर हुए. Type 1 reaction has two phases. Initial phase, it develops within 5 to 30 minutes and is characterized by vasodilation, vascular leakage, and smooth muscle spasm. B. Late phase, it develops 2 to 8 hours later without additional exposure to antigen and lasts for several days. Disorder resulting from type 1 hypersensitivity. Local or systemic reaction determined by the route of antigen exposure. Local reaction generally occur on skin or mucosal surface. Example of the local reaction: skin, lungs, nose, and intestine. Systemic reaction: anaphylaxis, anaphylactic shock. It is a life-threatening systemic type 1 hypersensitivity reaction that typically result from the injected allergen, penicillin, foreign serum, local anesthetic.
Release of mediator cause vasodilation and increase vascular permeability that leads to allergic edema, which particularly affect larynx and may cause fatal uh, as, asphyxia. Hypersensitivity to reaction. तो ये हमारे साथ नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म और डिफरेंट एंटीबॉडी और इसकी डिसऑर्डर क्या इसका प्रॉब्लम होता है बॉडी में। सो इन दिस टाइप 2 hypersensitivity antibody are formed against the cell surface or a tissue that contains the antigen. Antibodies are directed against antigen containing tissue. एक्सट्रेंजिक एंटीजन, द एंटीजन अटैच टू सेल सरफेस या ड्रग भी हो सकता है। एंट्रेंजिक एंटीजन, नॉर्मल सेल रिकोगनाइज्ड by immune system for some reason as a foreign. IgG and IgM antibody are produced against antigen. इसका मैकेनिज्म है three different types of antibodies dependent mechanism are involved. Number 1, complement mediated cytotoxicity. Complement mediated cytotoxicity, antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Number 3, opsonization. Complement mediated cytotoxicity, antibody dependent. Complement mediated cytotoxicity, antigen plus antibody stimulations of the complement. Complement system is a family of the small protein that work in enzymatic cascade to fight infection. IgG and IgM antibodies activate complement protein that binds to antigen antibody complex. This complement proteins engage other member of the complement family C2, C9. Some of them are activated by being cleaved or chopped by an enzyme. These proteins now attract certain cells neutrophils. Once neutrophils join the party, they degranulates या dump some enzymes which then generate oxygen radicals that is extremely cytotoxic to cells and can cause tissue damage. This is the mechanism. Antigen antibody attachment C1 complex, फिर C2A and C4B फ्रेगमेंट्स बने। फिर क्लासिकल पाथवे में C3 कन्वर्टेज के थ्रू, C3 हाइड्रोलेज के थ्रू, और फिर ये सारे कैस्केड बनता गया तो सेल स्वेल एंड बर्स्ट हो जाता है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी. एंटीबॉडी बाइंड्स विद एंटीजन बाय इट्स Fab portion. However, Fc region of the antibody's receptor on the cytotoxic cells. Antibody cross-link target cell microorganisms RBC with cytotoxic cells and promote killing. Most cytotoxic cell contain storage of hydrolytic and digestive enzymes. These enzymes are released on the surface of target cells and kills them. Here, antibody does not kill or destroy a cell itself, but rather mediate killing by presenting antigen to cytotoxic cells. Similarly, cytotoxic cell depends on antibody to bind antigen, so this mechanism is known as antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. This is the mechanism of action. What is opsonization? When antigen enters host body, antibodies are produced. This is the natural, ये तो होता है. Antibody binds to antigen through Fab region, which Fc region of the antibody remains free. So phagocytic cells such as neutrophil, macrophage and monocytes have receptor, then can bind to Fc region of the antibody. The receptor is known as FcR. In this case, antibody molecule directly cross links the antigen RBC which phagocytic cells. This cross linkage activates the phagocytic cells and increase the rate of phagocytosis. This increased rate of phagocytosis by binding of antibody to antigen is called opsonization. The increased rate of phagocytosis by binding of antibody to antigen is called opsonization.
Example of hypersensitivity to is a transfusion reaction, hemolytic disease of newborn. MCQs के लिए याद रखना ये दो, hemolytic disease and transfusion reaction. Blood type compatibility. ब्लड टाइप गिव एंड रिसीव, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. इससे ये भी आ सकता है कौन से किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है कि अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव बेबी, तो RH पॉजिटिव बेबी ब्लड सेल्स इंटर द मदर ब्लड, तो वो इन्वेडिंग RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स काज द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़. तो जब ये मदर के पेट में RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बन जाएगी तो इसके खिलाफ एंटीजन चला जाएगा तो एंटीबॉडी बन जाएगी. जब सेकेंड बाद फिर वो प्रेगनेंसी होगी तो RH एंटीबॉडी रिमेन इन द मदर ब्लड स्ट्रीम. तो RH antibody attack the RH positive baby blood cells causing RH disease. This is the mechanism. Blood hemolytic anemia कैसे होता है कि RBC है उसका एंटी RBC IgG, तो फिर मैक्रोफेज आया उस पर बाइंड किया तो वो स्पीरोसाइटिक बना. हाइपर सेंसिटिविटी. थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी 3 mediated by formation of antigen antibody aggregates immune complex बनता है. Also known as immune complex mediated hypersensitivity, antigen antibody complex mediated destruction of mediated by the formation of antigen antibody aggregates called immune complexes. Also known as the immune complexes mediated hypersensitivity, antigen antibody complex mediated destruction of the cells. Immune complex precipitate in the various tissues such as skin, joints, vessels or glomeruli and trigger the complement pathway. Complement activation leads to the recruitment of inflammatory cells, monocytes and neutrophils that release lysosomal enzymes and free radical at the site of immune complexes cause tissue damage. Type 3 hypersensitivity is primarily mediated by antibodies of the IgG and IgM classes which combine with the soluble antigen that are not bound to cell surface. The antigen may be self or foreign microbial. Mechanism of type 3 immune complex hypersensitivity. It involves the soluble antigen that are not bound to cell surface as opposed to those in type 2 hypersensitivity. When these antigen bind antibody, immune complexes of the different size form. Large complexes can be cleared by macrophages, but macrophages have difficulty in disposal of the small immune complexes. These immune complexes insert themselves into the small blood vessels, joints and glomeruli, causing symptoms like arthritis, nephritis and vasculitis respectively, while less commonly on the other organ, leading to organ dysfunction. Wherever immune complexes are deposited, they activate the complement system and macrophages and neutrophils are attracted to the site where they cause inflammation leading to tissue injury. मैकेनिज्म ऑफ थर्ड एंटीजन प्लस बी सेल्स की वजह से प्लाज्मा सेल्स, फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी हुई, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और न्यूट्रोफिल ने एक्ट किया, न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन हुई और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन से टिश्यू डैमेज हुआ. टाइप 3 hypersensitivity reaction develops when the immune complex activates C3A, C5A. Components of the complement system. C3A, C5A are lymphotoxin, anaphylotoxin that cause localized mast cells degranulations. Degranulation of mast cells release histamine, which increase vascular permeability of the blood capillaries. This facilitates the deposition of immune complexes on wall of the blood wall. C5A, C3A and C5B67 also act as
chemotatic factor for neutrophils, so it attracts neutrophils at the site of immune complex deposition. C3b acts as a opsonin by binding with immune complex. Neutrophil binds to C3b coated immune complex. The neutrophils attempt to phagocytose the immune complex, but phagocytosis is not possible because the immune complex are deposited on the basement membrane. So the neutrophil release lytic enzymes to destroy immune complex. The lytic enzymes cause tissue damage surrounding of immune complex deposits, resulting hypersensitivity reaction. Furthermore, complement proteins can also contribute to tissue destruction. Mechanism. This is the mechanism. फर्स्ट क्या होता है कि इंटरमीडिएट साइज्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट इन द टिश्यू. सेकंड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है. थर्ड में न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस होती है. फोर्थ में न्यूट्रोफिल एडहेरेंस एंड डीग्रेनुलेशन होता है. डिजीज. द मोस्ट कॉमन डिजीज इन्वॉल्व टाइप 3 hypersensitivity reactions are systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, post-streptococcal glomerulonephritis, serum sickness and Arthus reaction, and Farmer lungs. Farmer of the type 3. Basically, there are two major forms of immune complex mediated hypersensitivity. Number 1, localized type 3 hypersensitivity reaction, for example Arthus reactions. Generalized type 3 hypersensitivity reaction is a serum sickness. This is the Arthus reaction. The Arthus reaction is an example of localized type 3 hypersensitivity reaction. The Arthus reaction was discovered by the Nicholas Morris Arthus in 1903. When antigen is injected or enter the intradermal subcutaneous, they bind with antibody to form localized immune complex, which mediate acute Arthus reaction within 4 to 8 hours. As the reaction develop, localized tissue damage and vascular damage result in accumulation of fluids, edema, and RBC arrhythmia at the site of antigen entry. If the antigen is injected subcutaneously into an animal that already have very high level of antibodies in its bloodstream, acute inflammation will develop at the injection site within several hours. This is called Arthus reactions after the scientist who first described it. This is the mechanism of action. Systemic immune complex disease. Systemic immune complex disease, serum sickness, is an example of generalized type 3 hypersensitivity reaction when large amount of antigen enter the bloodstream and bind to antibody circulating immune complex form. If the antigen are insignificantly excess compared to the antibody, the immune complex formed are smaller and soluble, which are not phagocytized by phagocytic cells, leading to type 3 hypersensitivity reaction. The manifestation of serum sickness depend on the quantity of immune complex as well as overall site of deposition. The sites may vary, but accumulation of complexes occur at the site of blood filtration. Generalized type 3 hypersensitivity reaction at different sites result in different disease such as glomerulonephritis, vasculitis and arthritis. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. मुझे रीडिंग से ही इसकी समझ आ जाती है अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा या नहीं, लेकिन एमसीक्यूज़ और रिवीजन के लिए मैं इसको रीड कर लेता हूँ स्लाइड्स. थैंक यू.